So good morning everyone. Welcome to online classes of Kyal Public School. Today we will discuss our EVS chapter number 21. Chapter name is Life is Precious. Okay, today we will discuss question answer related to this chapter. So let's start. First question is tick the correct answer. What should we do when there is a red light signal on the road? And our correct answer is options are we should stop, we should go fast, we should go slow. So our correct answer is we should stop. Okay, अगर रेड लाइट का सिग्नल है तो हमें अपने व्हीकल को क्या करना है, स्टॉप करना है. An injured person is lying on the other side of the road. Which of the following action you will do there? Options are you will go straight away from there, you will keep standing with the crowd, you will phone an ambulance. Okay, so correct answer is option number phone. हम ambulance को phone करेंगे. Okay. Now question number 3 is platform ticket uses is in. Platform ticket कहाँ use करते हैं हम? Bus stand, railway station, airport. So our correct answer is railway station. Now come to next one. A man got injured in a road accident. What number will you dial to call an ambulance? Options are 106, 108, 104 and correct answer is 108. Now question number 5 is which of the following statement is correct? Option A, air pollution is very beneficial for us. Petrol is found on the top of the ground. The seat belt should be used while driving a car. So option number C is our correct answer. Okay, the seat belt should be used while driving a car. Now come to next question number 6. Delhi take this place for the most populated cities in the world. 4th place, 2nd place, 5th place. So option number A is correct answer. Now question number 7 is what should not be done while walking on the road? Option A, using of footpath, cross the road by running, and we should walk on the left side of the road. So correct answer is cross the road by running. Okay, ये हमें रोड पर वॉक करते टाइम हमें नहीं करना है कि हमें दौड़कर जो है रोड क्रॉस नहीं करनी है. Question number 8, it is not the cause of air pollution. Options are trees, factories, car, and our correct answer is trees. Okay, trees are not the cause of air pollution. Now next is which of the following statement is not correct? We should cross the road at the red light. We should walk on the right side of the road. We should drive slowly at the speed breakers. So option number B is correct. Okay, we should not walk on the right side of the. Okay, ये correct नहीं है. हमें always right side पर walk करना चाहिए. Okay, that's why this statement is not correct. Now next question number 10 is you are going to the railway station to leave your friend in the train. On the way a vehicle was stopped, then you will work out of it. Options are stay in the crowd, shout on the people, push the vehicle immediately to bring it at one side. So option number C is our correct answer. Clear? Now come to question number 2, that is fill in the blank. First is helmet is not a burden, it is your safety. Due to excessive movements of the vehicles, air pollution is created. Do not touch any unclaimed object. And the last one is we should cross the rail track only in specific place. Clear everyone? Now come to question number 3, that is true false. First question is we should not help any injured person. This statement is false. We can journey with a platform ticket in railway. This is also false. Okay, platform ticket platform पर जाने के लिए होता है. Okay, journey के लिए हमें journey का जो ticket है वो buy करना पड़ता है. Third is air pollution is very harmful for our health. This statement is true. We should fasten the seat belt while driving a car. This statement is also true. Clear? Now answer the following question. First one is
what should we do when there is a red light at the crossing? So we should stop our vehicle when there is a red light at the crossing. Next is, what should we do while driving a vehicle on a speed breaker? We should slow our vehicle when driving. Okay. Question number 3 is, if there is a cross mark on the icon of a horn, then what should not do? So answer is, if there is a cross mark on the icon of a horn, then we should not blow horn frequently and loudly. Question number 4 is, why one should not drive after being drunk? So after being drunk, a driver cannot follow the rules properly, so it increases the possibilities of accident. Now, next question number 5 is, what should we do to help an injured person in a road accident? So our answer is, firstly, we should give the injured person some first aid. After that, we should call an ambulance. Then we should inform the police. If ambulance is not available, then the injured person should be taken to the nearby hospital and we should inform the relatives of the injured person. Clear? Now come to next question number 6. What are the warning written and announced in the railway station? So the warning written and announced in the railway station are: ticket is necessary for traveling in train, do not touch any unclaimed object, passengers should take care of their belongings, passengers should not get down from a running train, and the last one is, people should maintain cleanliness in the railway station. Now come to next question number 7. That is, we should always follow the traffic rule. Why? हमें हमेशा traffic rule follow करने चाहिए. Why? For avoiding road accident, we should follow the traffic rules. If we break the traffic rules, the traffic police will charge the fine on us. Next question number 8 is, which things should be considered while walking on the road? So first point is, we should follow the traffic rules. We should walk on the left side of the road. While crossing the red light, we should use zebra crossing. We should not cross the road by running and use footpaths while walking. Now question number 9 is, if you go to railway station on your school visit, what type of question will come to your mind about the railway station? Write any 3 questions. Okay. अगर आप अपने स्कूल विजिट पे किसी रेलवे स्टेशन को विजिट करने गए हैं तो वहां पर आपके माइंड में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको यहाँ बताने हैं. First one is, why it is necessary to buy a ticket before entering the railway station? Which things we should take care of while crossing the rail track? And the why does the ticket checker charge fine from the passenger? Now question number 10 is, what is the role of a ticket checker? एक ticket checker का क्या role है, उनका क्या work है? So the role of a ticket checker is to check the tickets and charge a penalty from the passenger who travel without a railway ticket. Okay, उनका क्या वर्क रहता है, क्या रोल रहता है, वो टिकट चेक करते हैं. ओके, जर्नी का जो आपका टिकट है, एंड अगर जो पैसेंजर है विदाउट रेलवे टिकट ट्रेवल कर रहा है तो उन पर पेनल्टी चार्ज किया जाता है. ओके. Next question number 11 is, what is air pollution? What is the harm to us from this? Okay, air pollution क्या है, इससे हमें क्या क्या harm है, नुकसान है. So due to the movement of vehicles, operation of factories and burning of things, the smoke and poisonous gases spread in the air. The mixing of these things in air is known as air pollution, and this pollution enters our body and cause many diseases. Now next question number 12 is, how can we reduce the pollution in the air? Air में जो pollution है उसे हम कैसे reduce कर सकते हैं? So we should take following step to reduce the air pollution.
All the public transport should be modified so that they can run with natural gas or batteries, afforested with more and more trees. Poisonous gases should be reduced, which comes from factories. Now, next question number 13 is the ticket shown is for traveling from which place to which place. Okay, यहाँ पर देखिए टिकट शो किया गया है एंड यहाँ पर बताना है कि ये टिकट जो है किस प्लेस से लेकर कहाँ तक के ट्रैवल के लिए है। आपको टिकट पर इजीली दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये अजमेर जंक्शन से टिकट को लिया गया है कहाँ तक की जर्नी के लिए, जबलपुर तक की जर्नी के लिए। ओके, सो दिस टिकट इज फ्रॉम अजमेर टू जबलपुर. Now, what is the date and price of this ticket? This ticket is for 28 December 2015 and the price is rupees 505. These all things mentioned on the ticket. Now next question number 15. What other types of information do we get from the ticket? Ticket से हम और किस तरह की information get कर सकते हैं? So we get the information of train number, passenger count, PNR, date of travel, ticket number, age of the passenger, sex, fare, starting station and destination station, सीट नंबर, कोच नंबर एक्सेट्रा. सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है टिकट पर ऑलरेडी प्रिंटेड होती हैं, तो वहां से इन सब इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ एंड राइट द मीनिंग ऑफ सिंबल ऑफ रोड सेफ्टी. ओके, सो यहाँ पर कुछ रोड सेफ्टी के सिंबल दिए गए हैं. ओके, जो कि आपको पता होना चाहिए कि सिंबल जो है किस कौन से ट्रैफिक रूल के लिए है और उस वक्त आपको कौन सा ट्रैफिक रूल वहां पर फॉलो करना. ओके, here are the traffic light, that is red, yellow and green. Red means stop, yellow means watch carefully or get ready, and green means go. Okay, now next is this is a sign of one way. Okay, यहाँ पर only one sided या one way जो traffic है वो allow रहता है. This is the sign of stop. This is the sign of speed limit, that is 50 km per hour. Okay, जिस भी प्लेस पर आप इस तरह का साइन देखते हैं इट मींस वहां पर आपको जो अपना स्पीड लिमिट है, गाड़ी का जो आपके व्हीकल का जो स्पीड लिमिट है वो 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन जोन. ओके, जहां पर भी किसी एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो दिस इज द साइन ऑफ कंस्ट्रक्शन जोन. नेक्स्ट इज रेलवे क्रॉसिंग, दैट इज गार्डेड एंड रेलवे क्रॉसिंग अनगार्डेड. Next sign is zebra crossing. Okay, this is the sign of zebra crossing. School ahead, bus zone, cycle zone. Okay, कुछ जो सिग्नल साइन है उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उन पर ऑलरेडी पिक्चर या उस तरह का कुछ भी बना होता है, मार्क बना होता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली. ओके, बट सम जो साइन है वो आपके लिए न्यू है. ओके, नेक्स्ट इज नैरो रोड्स, लेफ्ट अहेड. नेक्स्ट इज नैरो रोड अहेड, आगे से जो रोड है वो कैसा हो गया है, नैरो हो गया है. नैरो रोड अहेड राइट, टू वे ट्रैफिक, दिस इज द साइन ऑफ टू वे ट्रैफिक. देन एयरपोर्ट अहेड, एनिमल जोन, right zigzag band, left zigzag band. Okay, this is the sign of right curve, this is the sign of left curve. Then bumps, speed breakers, road closed, then parking, no parking. Okay, P लिखा है and circle है, ये किसका साइन है, पार्किंग का. वहां पर आप अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं. ओके, एंड पी पर जब क्रॉस रहता है इट मींस नो पार्किंग, उन एरियाज में आप पार्किंग नहीं कर सकते हैं. देन नो ऑटोमोबाइल्स, नो ट्रक्स, नो हॉर्न. ओके, ये हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर हॉर्न का मार्क है उस पर क्रॉस बना हुआ है इट मींस आपको उस एरिया में फ्रीक्वेंटली एंड लाउडली हॉर्न ब्लो नहीं करना है. ओके, दिस इज द साइन ऑफ मैन एट वर्क, लेफ्ट टर्न, क्रॉस रोड्स. ओके, टू रोड जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है. नाउ दिस इज द साइन ऑफ राइट टर्न, रफ रोड अहेड, लैंडस्लाइड अहेड. ओके, हिली एरियाज में इस तरह के साइन आपको देखने को मिल सकते हैं, साइन बोर्ड. नेक्स्ट इज हॉस्पिटल अहेड एंड लेफ्ट टर्न पर अगर आपको क्रॉस मिल रहा है मीन्स नो लेफ्ट टर्न, आपको लेफ्ट टर्न नहीं लेना है. नो एंट्री, नो राइट टर्न. ओके, ड्राइव सेफली. एक्सीडेंट प्रोन एरिया मीन्स ऐसे एरियाज जहां पर एक्सीडेंट होने की जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है. ओके, दैट इज एक्सीडेंट प्रोन एरिया. नाउ एंड ऑफ स्पीड लिमिट,
ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यहाँ पर आपको दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करना मना है, ओके। देन स्टीप हिल, कि आगे जब भी आप जहाँ ड्राइविंग करें जिस रोड पर, आगे इस तरह से स्टीप हिल, एक सीधा हिल, यहाँ पर जो चढ़ाई है अपर की तरफ वो आने वाली, ओके। सो रेडी फॉर दैट, it's a narrow brace sign, then U-turn, and this is the sign of no U-turn. So here is our chapter number 7 is completed. Sorry, chapter number 20. Okay, so I hope you all understood about that. That is life is precious, chapter number 21. Okay, so thank you so much.